Good morning, students. So today it is another class of SDM. Till now we have completed. We are continuing the unit 2, and in this session, we have to discuss about the selection process. So in last session or in the last class, we have already discussed about the sources of the recruitment. So when we have discussed about the sources of recruitment, means the meaning is that is how or in what ways we can recruit the people, or in what that is how much that is जहाँ की कैसे हमें रिक्रूट पा सकते हैं, जो सेल्स पीपल जिसको हम रिक्रूटमेंट देंगे कैसे पा सकते हैं, कहाँ से लाएंगे. जो ये है जो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट द पर्सन्स विद इन द कंपनी, जो कि ये इंटरनल सोर्सेस है टोटली. एंड अनदर वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटर्स. एज वी नो दैट इज our competitors. Okay, as a company we know that is our competitors, and there is sometimes we are also hiring the employees from that of the competitors, but it was how much it is useful, that is also the demerit is also there, and already we have discussed in the last classes. Then we have already discussed that is another sources, that is from the non-competing companies. And we have also that is discussed on the that is education institutions. This is the best, that is the most important the sources of the recruitment. Okay, and another we have discussed that is the what of an advertisement and the employment, that is agencies. So my dear students, after the sources of recruitment, now we have to discuss about the selection process. Okay, today in this session we will start about the selection process. Okay, so SDM is 3.2. Okay, unit 2. Selection process. Okay, so basically students, we know that is after the sources, so knowing about the knowledge about the sources of the recruitment, so किस आधार पर हम सिलेक्शन करेंगे, क्या तरीका है जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे. क्योंकि मैंने पहले से ही बता चुका हूँ कि चूजिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. हमें अगर सही पीपल को, सही लोगों को और सही दैट इज एम्प्लॉय को अगर सही जगह पे नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये गलत हो सकता है, या जॉब को भी गलत हो सकता है और आदमी को भी गलत हो सकता है. So to appoint the right person to the right job is the very important task of a sales, that is the organization or that is the management, to appoint the right person to the right job. Okay, इसका मतलब है that is job भी अच्छा होगा और person भी जो belong करते हैं वो भी that is belonging to that job होगा. Okay, so my dear students, in this selection process we have to that is furnish that is how the sales manager have a pool of applicants, the large number of applicants he had. Okay, and from that collection of the applicants he has to choose the right one, he has to select the right one. क्या सही ढंग से अगर नहीं कर पाए ना, इसका मतलब है वही बुमेरंग कर उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा. Why the sales manager is appointing the right person? Because it will be easy to him to that is work, and the person who will recruit here, that recruit in that places, it will be what happened, there is the very good assistance to him. And also what happened, the company, the fruitful, the motto, it will be what happened, that is completely toward the benefit of the organization, it must be.
So the selection process involves mostly choosing the candidate and who is the best meet the qualification. Because when the peoples, when the sales peoples or the sales manager is going to select the right people, then first of all he is choosing upon the qualifications. On what basis? What the qualified? Because already we have discussed that is what happened while the choosing in the last classes we have already discussed. There is one thing you student remember it where there is in another cases where we have discussed there is a recruitment process में जैसे कि हमें डिस्कस किए थे कि कनेक्टिंग करना जॉब एनालिसिस, प्रिपेयरिंग करना जॉब डिस्क्रिप्शन और डेवलपमेंट करना जॉब क्वालिफिकेशन. सो हर जॉब का हर एक क्वालिटी होता है, जो क्वालिफिकेशन होता है, और उस क्वालिफिकेशन को हमें कैंडिडेट के ऊपर देखना चाहते हैं. उस कैंडिडेट जो भी वहाँ पे पोजीशन में आएंगे, जो कैंडिडेट वहाँ पे जो यू विल बी रिक्रूटेड टू दैट पोस्ट the qualification of the post must be equal to that of the aspirant or that is the employees. Okay, so it is one of the greatest aptitude, or mostly I have the greatest aptitude of the job for the job. And there are numerical tools, the techniques, the procedures that is used in the selection process. We'll discuss one by one. And companies, आजकल जो companies पर typically they are using initial screening interviews, mostly application forms, in-depth interviews, and reference checks, physical examinations, and tests. These are the various, that is the popular tools which are used in the selection process of the what? That is recruitment of selection process of the sales people, or that is the sales. और दैट इज द जो भी हमारा पीपल को जो सेल्स टीम में जो आना चाहेंगे उनके लिए हमें ये दैट इज चूज करना चाहिए. तो बेटा मैं और एक बात बताता हूँ बेटा, जो कि हमें जो सेल्स फोर्स के लिए जो हमें चाहिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो सिलेक्शन का जो होता है, इट इज मोस्टली ओनली एड टू हैव द साउंड एग्जीक्यूटिव जजमेंट. क्योंकि हमें सिंपल जो वेरीफाई करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, जो उनको मेजरमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाउ दे आर बी रिलायबल टू अस, हाउ दे आर द बिकम एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे आर द गुड एम्प्लॉय ऑफ द और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे विल असिस्ट their senior managers or the sales peoples or the sales the management in better way. That we have to see in depth. Okay, and that we one by one we will go to all the points. And it also what they can eliminate, that is the obvious unqualified candidate जो कि qualified नहीं होते, जो कि they are not belonging to the position, belonging to the post, obviously they have to disqualified, they have to be what happened eliminated from the what that is selections. Okay, and another that is generally आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत सारा माने दैट इज सेम मार्क में जो रैंकिंग होते हैं, सेम मार्क में भी दैट इज न्यूमरस कैंडिडेट्स आर फाउंड. इन दैट वे वेरी डिफिकल्ट टू चूज द राइट पर्सन, बट समटाइम्स दैट इज व्हाट हैपेंड, इट इज tactfully handled, and it is tactfully what happened, that is selected to the employees. Okay, so let us discuss some of the that is the selection process what we have. So my dear students, the first thing what happened, initial interviews, then application forms, then third in-depth interviews, fourth reference check,
that is physical examination. And sixth, that is test. So my dear students, let us analyze these things. When you are selecting or the right person to the right job, these are the various processes you have to find it, or it is very, very helpful where to take the guidelines or where to take the highlight these points when we are going to selecting the right people to the right jobs. First of all, what happened? That is the initial screening interview. We know that the sales manager have large number of the pool of applicants. हमें एक एग्जाम्पल लेना है. गवर्नमेंट जॉब में जब 10 पोस्ट होते हैं ना, 15,000 कभी कभी 1 लाख का एप्लीकेंट भी डाल देते हैं. ओके, जो 1 लाख का एप्लीकेंट डालते हैं मतलब दैट इज व्हाट हैपन only to that of the 10 post. See how there is a varies. So 10,000 पे 1 people select. It is a ratio, large ratio. How it is very difficult. कुछ reduce करना है, इसलिए हमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आजकल जो कंप्यूटर में होता है, पहले जमाने तो होता है जो सभी रिटर्न में डाल देते थे, माने ह्यूज ऑफ बर्डन ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर. बट आजकल जो कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है ना, जो नहीं होता है वो नहीं लेता, रिजेक्ट करके डाल देते हैं. सो यहाँ पे इनिशियल जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. The steps in the selection process is also varies from company to company. That is, we know, depending upon the size, depending upon the number of the sales people required, and depend upon the important positions of to be fulfilled. ये सभी हमें देखना चाहिए. क्या है? एक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक कितना पीपल हमें चाहिए, the number of sales people required, and another the important position of the position to be fulfilled. अगर हमें चाहिए एक जनरल सेल्स मैनेजर, क्या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर बैठा देंगे? नहीं ना. उनका जो क्वालिफिकेशन होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज या जो भी होते हैं, उनको परखना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है. सो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में हमें बहुत कुछ लाभ हो सकते हैं, जो कि मोस्टली वी हैव टू एलिमिनेट that much of aspirant or that much of the peoples or those who have employees, those who have given the applications, we have to most of them what happen eliminate from this round only, and rest they will, when the selection process will go ahead, then the number of aspirants or the number of employees usually goes in reduction. Okay, so first of all, the main purpose of the that is initial screening interview is what happen to eliminate. The target is to eliminate. कितना हो हमें एलिमिनेट कर सकते हैं, और जितना पॉसिबल होगा उतना हमें अच्छे रिक्रूट को पा लेंगे. जो अनडिजायरेबल रिक्रूट है उनको भी निकाल देंगे. जो इनिशियल जो स्क्रीनिंग स्टार्ट होता है एप्लीकेंट फॉर्म से और इंटरव्यू से, सेम टाइप ऑफ द जो टेस्ट होते हैं उसमें से देखना है, वेरीफाई करके हमें रखना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन, दैट इज द ये इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, इट इज ओनली फॉर द व्हाट हैपन, दैट इज द टू एलिमिनेट द लार्ज नंबर ऑफ द जो कि हमें चाहिए. अगर 10 पोस्ट के लिए अगर 10 एप्लीकेंट डाले तो क्या स्क्रीनिंग करना है? तब भी स्क्रीनिंग करते हैं. कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनी होते हैं, स्क्रीनिंग करना पड़ता है. क्योंकि ऑलवेज ट्राई टू गेट ए राइट पर्सन टू द राइट जॉब. अगर हमें राइट पर्सन टू द राइट जॉब नहीं मिलेगा तब इट इज ऑल आर वैल्यूलेस. सो दूसरा, दैट इज व्हाट एप्लीकेशन फॉर्म. So application form are one of the most widely
यूज्ड सिलेक्शन टूल्स, सभी डाल देते हैं अपने बायोडाटा और एप्लीकेशन वहीं से पता चलता है. दैट इज इट इज एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इजी मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन द रिटर्न फॉर्म में. उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका पोजीशन अप्लाइड फॉर, उनका फिजिकल कंडीशंस, पहले कहाँ पे जॉब किए थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रेफरेंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ जॉब क्या है, सभी हमें वहाँ से पता चल जाएगा. बिकॉज इट इज़ अ व्हाट रेज्यूम or that is the curriculum vitae. It is a what contains all the details of the employees or those who want to put the applications. Okay, so that is what यहाँ से भी हमें एप्लीकेशन को भी वेरीफाई करके हमें चाहे तो कुछ भी रिमूव कर सकते हैं. और पर्सनल रेफरेंस भी आजकल देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. पर्सनल रेफरेंस से ही हमें कुछ भी बेनिफिट हो सकता है. और अदर इम्पोर्टेंट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स पोजीशन के लिए, सेल्स पोजीशन के लिए भी डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, फॉर विच द एप्लीकेशन इज स्पेसिफिकली मेड अबाउट द प्रोडक्ट, मेंशनिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, अबाउट द फील्ड टू बी वर्क एंड एवरीथिंग, एंड दैट वी हैव टू फिल अप. एंड आजकल स्टूडेंट्स सभी हर तरह जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो भी कुछ होता है आजकल ऑनलाइन में हमें भर देते हैं. ऑनलाइन में भरने से एक अच्छा प्रॉब्लम यूजफुल होता है कि हमें अननेसेसरी थिंग्स को बढ़ावा नहीं देंगे, अननेसेसरी थिंग्स को भी नहीं डाल पाएंगे. अगर अननेसेसरी थिंग्स जो कि कंपनी रिलेटेड नहीं होता, डेफिनेटली दैट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. सो इसलिए हमें जो यहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं, यहाँ पे व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाई डू यू वांट टू चेंज द जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब को क्यों आते हो, वे भी क्वेश्चन आ सकता है. तुम्हारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या है, वो भी पूछ सकते हैं. एंड आर यू विलिंग टू ट्रैवल, या आर यू रेडी टू वर्क फॉर द 24/7 सर्विसेज. जो भी कुछ पर जो भी होता है वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है. इसका मतलब है इजीली वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द applications forms. Okay, and because it is purely and justly what happened, all the things to be fulfilled by the application, जो कि गलत नहीं हो सकता. Okay, so it is an important function of the application form, and it is help to sales manager prepare the personal interview, and यही को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर हम पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, जो कि कैंडिडेट अपना सर्च क्वेश्चन के लिए भी आग्रह हो सकता है या वन पे हम पा सकते हैं. सो ये हुआ दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म. एंड अनदर थर्ड इज दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू. इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब द इंटरव्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स एज कंपेयर ऑफ द वेरियस टूल्स वी हैव डिस्कस्ड. इट इज अ वेरी वेरी important because here recruiter and the recruiter, that is recruitee or that is what weapon, जो कि हमें एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों साथ साथ बैठेंगे. ओके, सो टीम, रिक्रूटेड टीम और जो कि रिक्रूट होंगे वो लोग साथ साथ बैठकर आमने सामने डिस्कस करेंगे, आमने सामने क्वेश्चन का आदान प्रदान होगा. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. और जनरली in fact there are 3 or 4 interviews are made, and it is usually conducted with the most of the desirable conduct. क्योंकि पहले से एप्लीकेशन फॉर्म, पहले से जो कि हमारा यहाँ पे जो इंटेलिजेंस के निर्देश में इन दोनों से दैट इज लगभग बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं ना वो एलिमिनेट हो गए होंगे. बाकी जो डिजायरेबल कैंडिडेट है वो डिजायरेबल कैंडिडेट यहाँ पे बैठेंगे इन डेप्थ इंटरव्यू में. इन डेप्थ में दो कि बिकॉज पोस्ट के हिसाब से हमें डिजायरेबल कैंडिडेट को लेना है. डिजायरेबल कैंडिडेट में ही डिजायरेबल कैंडिडेट से ही फिर से वहीं पे एग्जामिनेशन हो सकता है. सो यहाँ पे जो हमें टेकिंग टेस्ट करते हैं, जो गेटिंग द एप्लीकेंट्स पर्सनली वी कैन बातचीत कर सकते हैं सैलरी के रिगार्ड में, उनका इच्छा क्या होता है, उनका जो कि
what they want from the company, what company wants from them, all to be whatever free and frank. And about the psychological test and everything, whatever may be, that is they have, the candidate must have, here the candidate have to face all the questions and all the things and must give the answers as per the recruitment question. The personal interview, mostly it is determine the right person for the job, for the right job. It can bring out personal characteristic also, and जो कि सिलेक्शन में हमें यहीं पे we can get it all the actual things from the candidate only, okay? और इंटरव्यू में दो तरीके के होते हैं, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में और एक जो कि which means both the company and the applicants are questioned and learned about all this. That is the very important. And another that is what we are using, that is our that is reference check. ये दो चार तीन होने के बाद that is the very very important what happen reference check. Reference check में क्या होता है, जो कंपनी cannot be sure किस तरह की, अगर कुछ आजकल रेफरेंस जो चेक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. चाहे हमें रेफरेंस दे सकते हैं हमारा जो पिछले कंपनी का, जिस कंपनी से हम आए या कोई अपने जान पहचान भी हो सकते हैं जो कि अच्छे पोजीशन में है, बिकॉज कंपनी दे विल ओवर टेलीफोन ओनली, over phone calls only they will contact with that reference and they will find it. That's what will, how this person is reliable. Okay, persons का reliable जो होते हैं, persons how much they know to each other, they find it, because all the things it is only for the what secure, for the secure. Okay, here the company जो कि जब sure नहीं हो पाता है, इट ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि एप्लीकेशन फॉर्म से होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है, अगर वो रेफरेंस चेक से ही उसे बहुत कुछ भी मिल सकता है. एंड अंटिल चेक ऑल द थिंग्स, क्योंकि जो भी मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ दूंगा तो जो इस आदमी को दूंगा वो आदमी तो मेरे बारे में तो कुछ बताएगा ना, मैं चोर हूँ या कोई कुन्नी हूँ क्या कुछ भी है, तो मुझे वो कैसे पता, मैं तो अच्छी तरह रिज्यूम बनाया, बट रेफरेंस चेक से ही मेरा सब कुछ मुझे उन्हें पता चल जाएगा. सो रेफरेंस चेक से ही हर सो कंपनी जो कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन होता है जो कि अवेलेबल होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज, और रेफरेंस यूजुअली चेक्ड व्हाइल एप्लीकेशन फॉर्म्स इज प्रोसेस्ड. जब एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस होता है वही से ही हमें क्या दैट इज रेफरेंस चेक से ही सब कुछ पता चल सकता है. या दे हैव टू कलेक्ट द डाटा on the right person only. And reference में भी टीचर्स हो सकते हैं, फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो कि हमारा ऑल टाइप्स ऑफ जो रेफरेंस होते हैं वहाँ पे हम दे सकते हैं. मोस्टली इट इज अनकवर द इंफॉर्मेशंस अबाउट द एप्लीकेंट्स, that is that may not be changed, and if they change that is a manager perception up to the responsibility हमें ये भी देखना है. So reference चेक के बाद हमें फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मेनी सेल्स जॉब्स जो आजकल जो रिक्वायर करते हैं डिग्री ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, उनके पास स्टेमिना होना चाहिए. दिन रात में काम, मार्केटिंग का जॉब है तो दिन रात काम करना विदाउट रेस्ट, एंड ये उनके पास है ना नहीं हमें देखना चाहिए. अगर पुअर फिजिकल कंडीशन है तो दे कैन हिंडर सेल्स पर्सन्स द जॉब परफॉर्मेंस. Therefore, the company what happen should insist to the medical examination भी जा सकते हैं, उनका आँख का नज़र कितना है या बॉडी का हेल्थ कितना है, कुछ डिजीज होता है ना नहीं, ये सभी दैट इज क्रोनिक डिजीज या कुछ भी होता है. ये जो रिसर्च जो एग्जामिनेशन होता है ये इंटरप्रेटेड बाय द डॉक्टर. डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे ऑल द फिजिकल दैट इज डाटा ऑल द फिजिकल थिंग्स अबाउट द कस्टमर. And if because of this what happened, आजकल जो डिमांड होता है जॉब का, जो नोटिफाइड होता है रिजल्ट का, ये भी काम पे लग जाता है क्योंकि उनके ऊपर इंश्योरेंस होता है, सब कुछ होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस फिजिकल एग्जामिनेशन यूजुअली नॉट गिवन विद द रिक्रूटमेंट,
ओके, सो पहले से हमें करना चाहिए, देन इसके बाद दैट इज द लास्ट, दैट इज द टेस्ट। ओके, सो टेस्ट दिस इज द वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टूल। ओके, जैसे एक टीचर जाकर डेमो देंगे, आफ्टर पर्सनालिटी टेस्ट, आफ्टर ऑल द थिंग्स, द फाइनल दैट इज द डेमो। ओके, या पहले से डेमो ले जाते हैं। Regarding this is the important based from the various organization to organization, it is what different question regarding the legality of the testing। यहाँ पे जो इंक्रीज होता है कॉम्प्लेक्सिटी और कंट्रोवर्सी जो सराउंड होते हैं, दे यूज द टेस्ट ऑफ दिस स्क्रीनिंग टूल्स। द टेस्ट जो प्रोफाइल डाटा होता है दैट कैन बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट, एंड it is also used in the process of selection and classifying the sales applicants. Mostly these are the very likeliable to the higher performance जो perform देते हैं। The test may be the intelligent test, mostly knowledge test, sales aptitude test, vocational interview test या personality test वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है, ये सभी दे हैव टू उनको भी देना चाहिए। अगर इन टेस्ट में भी कुछ दे हैव टू नो अबाउट द माइंड्स ऑफ द कैंडिडेट। ओके, एंड थस सिलेक्शन ऑफ द गुड एप्लीकेंट, इट इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली एंड इम्पोर्टेंट एंड द चैलेंजिंग टास्क फॉर द सेल्स मैनेजर, क्योंकि जो कैंडिडेट नया बंदा आएंगे ना उनके पास ही काम करेंगे। अगर इनका तालमेल ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली व्हाट हैपन, इट विल हैपन टू द जॉब एंड इट विल हैपन टू द वर्क, एंड हैपनिंग टू द वर्क मीन्स डिस्टर्बेंस इन द वर्क मीन्स द टारगेट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हमें ये भी देखना चाहिए। ओके, सो वंस द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट और दैट इज द सिलेक्शन जो कंप्लीट होता है ना, ये न्यू सेल्स पर्सन जो होते हैं इंटीग्रेटेड करना सेल्स टीम को ये देखना है। So students, this is the what happened the selection process, and hope that is you have completed the notebook, and after that is in each everything whatever maybe you have to see the go through the topic always, go to the video classes and more things. Okay. And after that what happened, we have to discuss about many more things. Okay, that is so recruitment के बाद let us discuss about that is the training and the development, or we can say also profiling of the sales force also we have to see. Okay, so my dear students, always go through the topic, the notes, what the teachers they are giving, and always view the that is video classes, and try to come to that of the what that is the video classes. Thanking you. Stay home, stay safe.